लो। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Good morning. Like, as little disappointed to like seeing that only 14 or 13 students have joined as of now. Already we are late by 10, 15 minutes. And that is because of me only, but still, I just wish that all of you should join for all the sessions. Good morning, sir. Good morning. Any questions very quickly? Good morning, sir. जी सर जो इस वीक में क्लासेस कब तक होंगी सर? सैटरडे तक या फ्राइडे तक? Saturday, all 6 days. सर अगर रिक्वेस्ट थी, अगर ये सैटरडे ऑफ हो जाता तो सर हम सब ट्रैवल करके आएंगे, तो सर मतलब पैकिंग वगैरह भी ऑल वी हैव टू डन सर। कहाँ से आना आपने? सर कांगड़ा से आना सर, लेकिन सर इतने टाइम बाद सर मतलब आना है, तो सर टाइम मतलब पैकिंग वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम तो होगी। सर मैंने जम्मू से आना। कहीं से भी आना है बेटा, it doesn't take more than 10 hours, right? Except few students from northeast, Nepal, maybe Kashmir. मेरे को कोई इशू नहीं है, I can very easily skip it. But only thing I'm worried that
we need to close the things as quickly as possible. तो अगर आप we can start little early, not an issue. Instead of 10:30 or 10 around, we can start 9:30. आप बताएं. I'm not rigid about it, so yes. I'm just saying that you can travel within 10 hours from any part of Himachal. No sir, it's all right sir. अगर सिलेबस का इशू है तो we can manage sir, no problem. थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है. कागड़ा से तो 4 घंटे लगते हैं सारे, मे भी 5 लग सकते हैं. नहीं, Okay sir, no problem sir. जम्मू से तो ओवरनाइट ट्रैवल चलता है सारा. सैटरडे नाइट आप ट्रैवल करें, संडे मॉर्निंग सुबह यहाँ पे हॉस्टल का भी खर्चा बचेगा एक दिन का. राइट. Yes sir, yes sir. Okay. So we'll wait another 2 minutes. Around now, like I'm having 24 students who joined. So they already written in the chat box that we'll be closing the session by 11. So it will be around 40 minutes of session. Let's see how much we can cover it within those 40 minutes because I have meeting at 11:15. So that is purely on like yesterday. Did you have that Aishwarya sir class in the evening? Yes sir, yes sir. Yes, sir. ठीक है. तो आपको भी थोड़ा सा ज्ञान तो हो गया होगा because we are moving little fast. This is I know it, like, but we have to finish it. I am just presuming that you are following the process that we are covering and थोड़ा सा टाइम आपको उस पे लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. Generally the things that we cover in 2 lectures we trying to cover in 1.5, right? थोड़ा सा 30% के आसपास हमने इसको पेस अप किया हुआ है. इसमें एक ही है कि because all of you are senior and have got certain basics clear. So that's the presumption that I have, right? So still not many students have joined. It's 26 now. I have left with 1 minute, so 10:20 will start. So topic you can see on the screen is battens. ये हमने कल शुरू किया था topic laces and lacing and batten. So batten is another part of strengthening and joining two vertical members only with a view that we need to have certain more load carrying capacity. 2 column को आपस में join करते हैं हम लोग, right? So it's not only 2 columns. Sometimes we have to join 4 columns, like 4 in the 4 corners. Let me connect my board here. Just give me 1 minute. Screen is there. सिंगल शेयरिंग है या डबल, कुछ आइडिया है उसका? क्या चीज? हॉस्टल में सिंगल शेयरिंग है या ट्रिपल? सिंगल. ओके सर. अगर किसी को कंफर्टेबल है तो दे कैन शेयर, नॉट मोर देन 2. ओके सर. अगर कहेगा कि सर मेरे को कोरोना हो जाएगा उससे, फिर एक ही. सर उससे रेट कम हो जाएगी अगर डबल शेयरिंग होगी? नहीं, रेट तो इतना ही रहेगा बेटा. ओके. 300 पर डे होता था, 400 हाँ? पे सिंगल का और डबल का, तो फर्क तो होगा कुछ. हेलो? सर आई एम सेइंग कि अगर आवाज double नहीं आ रही, sharing- आवाज नहीं आ रही. आई एम नॉट एबल टू लिसन क्लियरली. थोड़ा सा ऊंचा बोलिए. So what I'm trying to say is कि डबल शेयरिंग में फर्क तो पड़ना चाहिए था. लाइक हो रहा है, अगर 100 रुपए का तो चेंज होना चाहिए. सिंगल में तो एक्सपेंसिव होता है, आई डू अंडरस्टैंड. नहीं, डबल में तो इसमें क्या है, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है. वी आर फॉलोइंग दैट we are to put the students in one room only. That's why. ठीक है. अभी मैं इसलिए बोला ना, किसी को बोले नहीं सर मेरे को कोई इशू नहीं है, I can share. So it is not on your अच्छा. part. ओके सर एक्चुअली सर जो बच्चे सर ट्रिपल शेयरिंग में थे ना सर, उनका सामान अभी भी वहीं पे पड़ा हुआ है सर. तो एक आधा दिन तो सर सामान सेट करने में लग जाएगा सर हमारा. कोई बात नहीं बेटा. आप इतनी इफ्स एंड बट्स क्यों लगा रहे हैं? लाइक पहली बात तो ये है कि वी आर नॉट पासिंग थ्रू वेरी नॉर्मल टाइम, राइट? ये सभी को पता है. When you are in crisis, you have to stretch yourself. When you are in crisis, you have to put little extra effort. When you are in crisis, you have to put certain additional thoughts into the process. All the time, we cannot think that everything should be in our comfort.
This applies to everyone, like not to me as well. ये सभी को अच्छा खासा ज्ञान हो गया अभी एक साल में कि this is some time which is not we wish not to see it again actually. So we have not seen it last जैसे मेरे तो 50 साल हो गए, 50 साल में मैंने ऐसा टाइम देखा नहीं. सो अभी कुछ नए टाइम में नई चीजें आई हैं, तो उस टाइम के हिसाब से सभी को आई विश एंड यू आल्सो लाइक मैच्योर इनफ टू सी द थिंग्स लाइक कि अभी मेरे को एक बिस्तर उठाने में पूरा दिन तो लगेगा नहीं ना. अपना सामान उठाएं, सेट करें, दैट्स ऑल. गॉट इट. यस सर. हाँ, तो थोड़ा सा जिसको बोलते हैं ना कि थोड़ा सा एफर्ट जो है वो मैनेजमेंट, आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि हाउ मच एफर्ट द मैनेजमेंट इज पुटिंग इनटू दिस प्रोसेस. आप लोगों के लिए या लाइक पब्लिक इन जनरल दे से कि बुला लिया या ना बुला लिया, दीज आर द टू स्टेटमेंट्स ओनली. बट हाउ मच like how many hours we are like spending on this thought process, क्या बनाना है, क्या करना है, और like some of the person are working 24 hours in the campus to make the things ready for you. I think you should understand and you can easily understand it, isn't it? अभी तो आपका बहुत कुछ पेंडिंग पड़ा है अभी, like आपको ट्रेनिंग पे जाना है, that's the more important part. Shall we start? यस सर. आप तो कुछ लोग तो गेट की तैयारी भी कर रहे हैं, उनको वहां पे भी जाना है. So we have to see each and every process. अभी we have to go by the masses actually and as per as the government guidelines. सर अगर किसी को कोरोना हो गया फिर वो घर जाएगा, उसको क्वारंटाइन कर देंगे. सर सर यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी उसके लिए. किसके लिए? कोरोना के लिए? यस सर. आप एक सेकेंड, बिल्कुल बच्चों जैसी बात कर रहे हैं आप. सर वी नेवर नो ना किसको क्या है सर, कौन सा हम हाँ, पूरा नहीं, टेस्ट करा के आ रहे हैं या कुछ. नहीं वो इसलिए तो आइसोलेशन में रख रहे हैं ना. तो विल बी कंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग. आप कहाँ से हैं? सर जम्मू से. जम्मू से है ना. यस तो लाइक अगर आप मुझे आपके पिछले 10 दिन की या 15 दिन की दिनचर्या समझते हैं, डे टू डे एक्टिविटी 10 दिन की बता पाएंगे? How many marriage functions you have attended last 10 days? How many parties? नो सर. सर एक भी नहीं सर. How many times you have gone to the market to buy vegetables? How many times you have gone to certain like malls or something? बता सर पाएं? वो तो यूजुअली जाते ही हैं सामान वगैरह लेने. तो फिर how many persons you come across in the day? Like सर so this is some like I'm not answering it, but I'm just seeing that this is some immature question actually. नहीं गारंटी कोरोना को तो वैसे मैं अपने बता रहा है, पास टू दिस कोरोना राइट, शायद पता हो Yes, आपको. मैं सितंबर में इन्फेक्टेड हो गया था, तो आई गॉट इन्फेक्टेड थ्रू माय सन ओनली. oh ही ट्रैवल्ड फ्रॉम मुंबई, केम टू एयरपोर्ट, हैड टू गेट टू हिम टू माय होम एंड वी गॉट इन्फेक्टेड. ही हिमसेल्फ, माय वाइफ एंड आई, ऑल ऑफ थ्री ऑफ अस क्वारंटाइन. तो गारंटी थोड़ा होता है इसका चीज, तो टाइम ही ऐसे है, टोटली इनविजिबल चीज. yes sir, yes sir. तो ओनली सर फिर सवारी अपने सामान की आप जिम्मेवार है, बट बहुत सारी गाइडलाइंस है, वो जो हमारा हिस्से की गाइडलाइंस हम पूरा करेंगे, जो आपके हिस्से की गाइडलाइंस है वो आप पूरा करेंगे. बोथ आर डूइंग द रिस्पेक्टिव जॉब्स, देन आई डोंट सी एनी इशू इन दिस प्रोसेस. अभी तो काफी ईज आउट हो गया है. अभी तो पहले but some of the guidelines are means against us कि अगर हम एक दूसरे के रूम नहीं जा सकते, व्हाट इज द यूज कैंपस में आने का, क्या फायदा अगर हम एक दूसरे के रूम में जाके पढ़ के डिस्कस नहीं कर सकते हैं. कोई बात नहीं, गाइडलाइंस आप आएंगे तो देखेंगे. राइट, तो आएंगे तो आएंगे, आप पेपर देने तो आना तो पड़ेगा. आप टीम इंडिया की बात सुन रहे हैं ना आजकल. सुन नहीं देखते सर, मैं क्रिकेट नहीं देखता. उनको भी ऐसी बसूड़ी पड़ी हुई है, वो कह रहे हैं कि अपने अपने रूम में रहो, अपने फ्लोर से रूम पर दूसरे फ्लोर पे नहीं जा सकते.
So these are the things that one has to follow, right? अभी टीम इंडिया भी कि बोले कि क्रिकेट टीम की बात करें कि सर हम ऑस्ट्रेलिया में आए हैं तो घूमने ना जाए तो फिर क्या फन है तो क्रिकेट पर टीम व्हाट में। इज द यूज अगर हम साथ बैठ के पढ़ ही नहीं सके सर, डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो गए। अदरवाइज मैं अपने घर बैठ के पेपर पढ़ लूं, फिर क्या सर दिक्कत है उस चीज वही के बता लिए? रहा हूँ बेटा, इट्स ऑल अप टू यू that if you're ओके सर, comfortable with me then you can sit with me, if I am comfortable with you I can sit with you, right? ओके सर, It's mutual गॉट इट consent, सर, गॉट इट सर, गॉट इट। right? Sir, what about reappear? अभी रिपीट का तो डेट शीट आने वाला है, आ जाएगा। सभी ने अप्लाई तो करना शुरू कर दिया होगा। Yes, sir. Yes. You're asking about the date sheet, right? Yes, sir. Yes, sir. Right. It will be out. So, shall we start? हाँ जी सर। Yes. Right. सर Anuj, सर वो कंसेंट देना जरूरी है, मतलब कंसेंट लेटर भी लिखे आना है साथ में? but that's a part of the formality. यहाँ पे दो चीजें होती है ना, that उसमें जैसे अभी क्वेश्चन पूछा ना कि who shall be responsible, right? यस Who will सर। be responsible? So responsibility entirely lies with the oneself. Like मैंने बड़ा क्लियरली बोला है कि आप अपने हिस्से का काम करें, मैनेजमेंट अपने हिस्से का काम करेगी, अगर दोनों अपना अपना काम ठीक ढंग से करेंगे तो कुछ भी इशू नहीं है। देन these documents become formality. अब देखिए ना, डॉक्टर्स फ्रंट लाइन पर लगे हैं हॉस्पिटल में, और डॉक्टर कहेंगे हमें गारंटी दो यार, हमें कोरोना नहीं होगा, ठीक है ना। अभी तो आप अभी आई डोंट नो आप हिमाचल से हैं कहाँ से हैं, लाइक इफ यू सी इन चंडीगढ़ और लुधियाना और सम सिटी इन पंजाब, सो यू गो टू लाइक चंडीगढ़ में आप एनसीआर मॉल में तो गए होंगे ना, जब यहाँ पे तो लास्ट टाइम। अंबाला से हूँ सर मैं तो। हाँ, तो अम्बाला में भी अभी आप देखें, अभी चंडीगढ़ में अगर अम्बाला से तो आप हमारे अंबाला का तो होम मिनिस्टर को भी वो हुआ था, एडमिट हुआ था। हाँ, उसको तो वैक्सीन होने के बाद हो गया ना, उसको यस वैक्सीन सर। की डोज दिया, नेक्स्ट डे ही वाज पॉजिटिव। तो आप देखेंगे उसने प्रिकॉशन नहीं लिया होगा, ही माइट हैव द हाईएस्ट काइंड ऑफ प्रिकॉशन, राइट? अमिताभ बच्चन को हो गया, दीपिका पादुकोण को हो गया, तो आपको भी हो जाए तो यू विल बी इन दैट कैटेगरी, एलीट कैटेगरी। आई डोंट विश कि आप हो, बट इट्स बेटर टू अवॉइड इट, राइट? सो एनी हाउ विल स्टार्ट। सो द टॉपिक ऑलरेडी 10:30 हो गया, आधा घंटा हमारे पास पड़ा है। So we had started with the topic designing of laced and batten columns. Purpose आपको clear है कि why do we go for laces or why do we go for battens? Like that purpose remains the same. And the relevant clause to cover this topic is as per IS code is 7.7. Right? You can open this. I already opened it. This is the batten column. The basic guidelines. And this is in parallel. Yesterday we had this basic. Now we are going for the batten. So the basic guidelines mentioned in the table. So we'll be talking about these like a little bit in summarized fashion. So I would request again that you should read these lines very carefully. So I'm just reading one paragraph for you, right? The very first one. Compression members. So that means the battens are for compression members, composed of two main components. जो हमने किया था कि दो column है, it can be channels like this, should preferably have the individual members of the same cross section, कि दोनों member हैं वो एक ही section के हों, and symmetrically disposed about their major axis, like कि इनका balance हो, left and right, upper and bottom should be balanced, where practicable. The compression members should have a, ये हमने कल भी लेसिंग में भी पढ़ा था, the compression members should have radius of gyration about the axis perpendicular to the plane of the batten, right? So batten, अभी मैं figure पे जाऊंगा थोड़ी देर में. You can see that figure, like batten is here, this red one, batten is here. So the plane of batten perpendicular axis is YY, right? So radius of gyration about the perpendicular axis to the batten, that is RYY, should not be less than the radius of gyration about the axis parallel to the plane of the batten. And that parallel axis is
Z axis. So ये हमने relation में पढ़ा था. I am repeating this line again only because you have to see into the details meaning of each and every line written in the code. Just a minute. जी सर. हाँ हाँ. हाँ हाँ. From respective place. ठीक है, आप ग्रुप में डाल दो इसको. हाँ 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 हाँ. यार हमने ग्रुप में नहीं डाली. ठीक है. चलो फिर सर को बनाना है. Hello. Yes, some call was there actually. So I'm back. So this RYY should not be less than RZZ. So at least it should be equal and it should not be less than RZZ. Or that means RYY should be greater than RZ. So I'll be highlighting this equation in the hand notes, but I'm just trying to request you that please read these lines carefully one by one because when you read it, you will be getting the real meaning. So this is the positioning of the buttons. This figure says something like this is y-axis. Let me change the color. Okay. This is y-axis and this is z-axis, right? So the buttons are there. There are certain beginning guidelines. So this is the center to center. किसी की आवाज आ रही है बेटा किचन में से. See, this is the center distance between two buttons placed in the vertical plane. Right. So I'm just reading out certain basics in the hand notes. We'll just go through. So this is the line that I was just trying to convey that RYY should इसमें equal का symbol आप डाल सकते हैं. RYY should be greater than or equal to at least equal to RZZ. That means RYY should not be less than RZZ. Okay. There's another basic like clauses written in the IS code. You can go through this. आवाज किसका आ रहा है यार? किसका माइक ऑन है? पराठे बना रहा है कोई? Okay. Clause 7.7.1.3. You read the details, but the meaning of this clause is that pattern shall be placed uniformly. Uniformly means, for example, you see this figure. If this distance is 100, then next button should also be at 100. That doesn't mean that you provide one button here, another button at one button at 100 center, another button at maybe different than 100. So this should not be there. This should be placed symmetrically. This is as simple as that. The minimum 3 buttons are required. This has to be there. So जब आप पैटर्न डिजाइन करेंगे तो 3 तो रखने ही है, हमने 2 से काम नहीं चलता, राइट? So minimum 3 buttons have to be placed, and all these 3 buttons should be of the same. इसमें दो तरह के पैटर्न बन जाते हैं, like this one, only 3 buttons are there. This is the end line, and this is the end line. This is the foundation part, right? So we have 3 buttons. इसमें 2 categories बन जाती हैं. This one is the end button. This one. And this one is also end button, and the central one becomes the intermediate button. So there are certain basic
terminology and little bit change in the design of this end baton and the intermediate baton. You should be clear with this nomenclature that two types of batons are there. One is end and second one is the central one is the intermediate or the middle one, right? If only three are there. And minimum three has to be there. Then opposite to each other. Opposite to each other means like if you see the plan or the other side of the face, uh, the column like face A or face B. तो face A का जो button है face B पे बिल्कुल उसके पीछे लगा होना चाहिए like at the same position, right? Got it? So these three are the basic criteria which have been explained in 7.7.1.3. So you can read the details. इसमें central meaning तो ये है जो मैंने अभी highlight किया हुआ. You can read it in tandem with the hand notes and keeping your IS 800 book alongside. The next one, 7.7.1.4, that next clause, that effective slenderness ratio is 10% more. Can somebody tell me what was the effective slenderness ratio in case of lacing? ये 10% था तो lacing में कितना था? Somebody has gone through, लिखा भी हो यहाँ पे. Hello. सभी बैठे हैं या चले गए हैं? Hello. Nobody is talking. Yes, sir. Yes, sir. मैं पूछ रहा हूँ ये if it is 10% in case of battens, the slenderness ratio, what percentage it was in case of lacing? So we have discussed. अभी लिखा भी वाला है यहाँ पे. Did you read this? 1.05. 1.05. That means 5%, right? और batten में ये 1.1 हो जाएगा और lacing में ये 1.05 था. That means 5%. So that's what I was asking. क्योंकि उस केस में हमने परसेंटेज में डिफाइन नहीं किया था, तो मैंने 1.05 लिखा था. That this is 5% in case of lacing. तो जब हमने कल न्यूमेरिकल किया था स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट किया था तो 1.05 से मल्टीप्लाई करके फिर हमने स्लैंडरनेस रेशियो कैलकुलेट किया था. सो नेक्स्ट वन, द शियर फोर्स, ट्रांसवर्स शियर फोर्स V जो हमने लेसिंग में भी किया था इसमें भी आएगी. दिस इज 2.5%. सो दिस इज सेम एज वी हैव डन इन केस ऑफ लेसिंग, राइट? And the longitudinal shear force, because these are horizontal, right? So lacing तो inclined था, this one is horizontal. अखिल जी क्लास में बाद में करूं? Right. So the longitudinal force जो कल हमने lacing because it was inclined, right? Like this, right? So we have resolved this component horizontal force जो theta के हिसाब से हमने देखा था, right? So this was the force, then F sin theta, right? तो इसमें हमने ये longitudinal force का सीधा फार्मूला यूज करना है. दिस इज V into C divided by N multiplied by S. And what is the meaning of this? This is mentioned in the code itself. You see the code 7.721, 7.721, right? This one. This is the clause. So the formula is written here. The meaning is clearly written here that V1 is the transverse shear force as defined above. Above means about this formula 2.5% जो हमने लिखा है. Coming back to the handwritten notes. V is this much, ये वाला, right? And C is this distance, the center to center distance between the battens. This much, this distance, right? And is the number of parallel planes. And number of parallel planes in case of batten is 2. So you have to mention that this is one plane and one is behind. So we take this value as 2.
right? And S is the minimum transverse distance between the fasteners connecting batten to main members. Like if you see this figure, I just erase. If you see, this is the distance marked on the drawing as S, this one. And let me take to the column figure. Now, this is the, now, S जो है, this is the distance from the first bolt to the first bolt on the other side, the inner bolt. So this is the S, right? Minimum transverse distance between the centroid of the rivet connecting the batten to the main plate. If it is a welded case, then welded case में हम center से लेंगे. In case of it is welded connection. So we'll do it when we are done with this basic. And also the moment, this is longitudinal force. Longitudinal force VL is equal to V into C divided by N into S. And N is 2. Rest is the as per the given section or job design करेंगे. Moment is V into C divided by 2 into N. So this is also the moment which is to be calculated. ये हम आपको याद रखना है जब कैलकुलेशन डिजाइन स्टेप करेंगे उसमें यूज करेंगे. Now because we have to design the battens, so design the batten means we have to see कि center to center distance वो already हमने workout कर लिया उस फार्मूले से जो भी हमने किया. Then the dimensions. Dimensions means ये batten जो हमने प्रोवाइड करना है जिसको हम बोलते हैं कि एक स्ट्रिप प्रोवाइड करेंगे हम लोग, उसकी विड्थ कितनी है, उसकी थिकनेस कितनी है, right? Then of course the spacing. Then T minimum means the thickness of the batten has to be 1/50th of the distance between innermost connecting line of rivets, right? जो अभी हमने S लिखा था इस फॉर्मूले में AI लिखा हुआ है, we can always mention it as S. Some books are using AI or some books are using S, so you can use AI divided by 50, right? So this minimum distance has two criteria. One is for the end batten. End batten जो है effective depth. First is the thickness. This is first. This one is second criteria. Effective depth is the B dimension, right? So the effective depth or the B has to be the end batten के लिए shall not be less than A. Shall not be less than A. This is the dimension A. And for intermediate batten, it shall not be less than 3/4 of A. So I've already made it clear that what is end batten and what is the intermediate batten, right? तो दोनों की जो dimension है B, this dimension, which I'm shading here, right? It shall not be less than A, and where A is the centroid of the connected member, whereas AI is the inner distance. AI and A, there's a difference here, right? So it should not be less than A, and it should for intermediate batten it should not be less than 3/4 of A. So then the length of the weld connecting batten to the members. Length of the weld connecting batten to the members means this welding length. अगर ये weld करना है तो ये यहाँ पे weld होगा, right? The space available. It shall not be less than half the depth of the batten plate. Means अगर ये dimension B है, if this dimension is B, then the welding length LW shall not be less than half of B, right? That means B
shall be greater than 2LW. So you can check this. Then the spacing, all these are given in the code step by step. Then the next is spacing of battens. Spacing, I have talked about this C, right? Center to center. This spacing, as per clause 7.7.3, C upon R minimum shall not be less than 0.7 lambda, where lambda is the slenderness ratio. Lambda is slenderness ratio, right? And R is the minimum radius of gyration of the individual section. And this is one criteria, and second is shall not be less than 50. तो दोनों को satisfy करेगा, उस हिसाब से spacing जो है वो C जो decide करेंगे, C is center to center spacing, right? Then the end conditions 7.7.4 to satisfy V, that is transverse but shear force and the moment. For welded connection, lap shall be greater than 40. The total length of the weld, H of the pattern shall be greater than. ये आपको सिर्फ ये क्लॉज याद रखना है. when जब डिजाइन करेंगे we'll be wrapping all these this 1, 2, 3 and 4, right? These are the micro detailings of the weld when we provide it. Then the total length of the weld at the edge of the pattern shall be greater than D by 2. Already हमने पहले भी लिखा है. Lap should be greater than 40. 40 means like lap का मतलब है कि जैसे this is the vertical member and we are connecting the batten here. So we can end the batten here, or we can take the batten here up till the end here, or we can leave. So this is the lap length. कितना lap करना है, जितना हमें रिक्वायर्ड होगा उस हिसाब से हम उसको एक्सटेंड करेंगे, राइट? It should be greater than 40, where T is the thickness of that weld, right? So coming to the design steps, based upon these basic information that we can always get from IS 800, design step. Step number 1, जैसे कि हमने उसमें किया था, transverse shear is equal to 2.5% of the vertical force which the column has to handle. जैसे कल किया था वैसे हम इसकी vertical shear transverse shear force calculate, that is 2.5%. Then to calculate longitudinal shear force along axis, we be using these two formulas. Already we have this. Then moving to slenderness ratio. Right. Then step number 3, for given shape, find G, the gauge distance from the steel table. जो हम member decide करेंगे, for example, this channel is we are providing this channel, so we'll be getting this distance G. Then find the distance A. So based upon this G and adding into S plus 2G, right? So we'll be calculating the A distance between the bolt centers, right? Then fourth step is this calculate spacing C. The minimum 3 number of battens. Already we have followed these basics. Then effective depth of that batten, that is S plus 2 C by Y. Then overall depth, length of batten. Just remember these steps. So we'll be following when we are to solve the numeric, right? So after like following these 5 steps, we shall be shifting. We shall try to then solve this question, right? Just दो चीजें इसमें मिसिंग है, आप इसमें लिख लें. Step number 6. Size of
intermediate batten, and that shall be 3 by 4 of this size. जो हमने पहले कैलकुलेट किया है वो जैसे डिजाइन में कि इंटरमीडिएट बैटन का साइज जो है वो एंड बैटन से 75% होगा, दैट इज 3/4 ऑफ दिस, राइट. Then step number 7 is the design of the connections. जो हमने पहले किया वो डिजाइन, अगर बोल्ट है तो बोल्ट कनेक्शन, design of connection. If it is bolt, then we go for bolt connection as per the design of bolts. And if it is welded, then we go for welded connection as per the design criteria of welded connection. So this is the complete stepwise information. So just I will write one statement here. If you can try, we'll be trying to solve it tomorrow, right? Let me open one blank sheet here. Yeah. So I'm just writing one statement here. You can try referring the book that you have, or maybe the hand notes that I'll be sharing here. Design, we'll be covering, we'll do it tomorrow in the class itself. Design a battened column with 2 channels, same numerical जो हमने पहले किए, back to back, length 10 meter, axial load, same numerical, so we have done it for lacing. So this is 1400 kilonewton. kilonewton, right? The question is that these are the 2 channels, so we have to design for the pattern with bolts. So we'll be doing this numerical tomorrow. These are the 2 channels here. वही प्रोसेस करेंगे, पहले तो हमें सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये वाली ढूंढनी है, राइट? तो जैसे हमने कल किया था 220, तो विल नॉट रिपीटिंग दैट स्टेप हियर, so that will be 220 because the load is same, member is same. The only thing that we need to change is that for yesterday we did it for lacing, so tomorrow we'll be doing it for the batting. These are the batten. So vertically इसको देखेंगे, so this is one channel here, this is another channel here. So we'll be designing one batten here, another batten here, and the third batten. Okay. So we'll be calculating C here. So we'll be calculating total length over here. So we'll be getting the D dimension here. We'll also be designing the number of bolts. So we'll complete this. I'll be sharing today's lecture handwritten as well as little bit information on the PPT itself. So just go through. So we'll try to cover it tomorrow. Right? Yes, sir. Yes, sir. The बस का information वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट मैनेजर है उनकी तरफ से आया था, those who are coming for less than 15 days, and hopefully it will be less than 15 days for all of you. So you will be charged half the transportation fee per month that we have been paying during regular times. But if it is more than 15 days, so hopefully will not be extending beyond 31st of Jan, so it will be definitely less than 15 days. But in any case, if somebody is willing to go for like extension of some reason,
one has to pay for the full month. That is the bus transportation fee for 1 month. So for all your like regular queries, and always be in touch with Dr. Abhishek, because nowadays I am coming to the Punjab campus. So Dr. Abhishek is there in the Himachal campus, and Dr. Prakasham is also there. You can post the queries, but I am also always there, like on the WhatsApp and all. So this is all from my side. So थोड़ा बहुत हम फास्ट लें, बट फास्ट को आप एक ही तरीके से कवर कर सकते हैं कि आप इसको just spend half an hour, 1 hour after the lecture is over, maybe in the evening. That's to recover the things. Like keeping your ISM 800 book along when you read all these notes, right? So शॉप बता दो चंडीगढ़ में जहाँ ये बुक और स्टील टेबल मिल जाए मुझे। आवाज नहीं आ रही है। Somebody is trying to say something. हेलो जी हाँ, अब ठीक है। सर चंडीगढ़ में कोई शॉप बता दो जहाँ मुझे स्टील की बुक मिल जाए और स्टील का टेबल मिल जाए। अभी मैंने तो ट्राई नहीं किया। You can come to the campus and get the book from the library. सर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती, बच्चे होगी पहुंचता हूँ बच्चे उठा लेते हैं सारी। कोई भी बच्चे ने ली है। आपको कौन सी बुक चाहिए? आपको शॉप में तो दी हुई है सभी को। You can always go to sector 15 or 17 market. There are 2-3 shops. You can always get it. Otherwise, you can order it online. Amazon पे तो आपको तीसरे दिन मिल जाएगी। ओके सर। आज ऑर्डर करेंगे तो परसों मिल जाएगी आपको। ओके सर। Amazon is the best way to get the book. आपको चंडीगढ़ भी घूमना नहीं पड़ेगा। Right? ओके सर। ठीक है। यस सर। So I'm closing the session because I need to go for some meeting right now. तो जो हॉस्टल के लिए अप्लाई करना है, वो आपने जो नोटिस भेजा था उसमें फॉर्म भर के करना है। आप अभिषेक सर को बता दो बेटा। ओके सर।